नमस्ते, स्वागत है आपका इंडी गेमर्स पे। यह शर्लॉक होम्स के 5वें केस का 7वां भाग है। तो चलो जाते हैं क्यू गार्डन्स। पहले मिस्टर मार्टिन हेमिश से बात करते हैं। Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. सही जवाब देते हैं फोटोग्राफ विद फादर। I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. पुतला। There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. वापिस सही जवाब देते हैं फ्रैगमेंट फ्रॉम अ स्टैच्यू। It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. अभी जो मिस्टर होम्स को फर्टिलाइजर चाहिए वो ढूंढते हैं। ग्रीन हाउस में जाते हैं पहले। एल्बर्ट से पूछते हैं। सपना नेवी में जाने का। I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. सही जवाब देते हैं एल्बर्ट्स होप्स। And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct.
and in fact my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. डिडक्शन आया है, वो करते हैं। हेमिशेस एल्बर्ट्स ह्यूमिलेशन और एल्बर्ट्स एम्बिशन जोड़ते हैं। द न्यू डायरेक्टर और हेमिशेस एंगर भी जोड़ते हैं। और कुछ नहीं जुड़ रहा तो डिडक्शन से बाहर आते हैं। इधर फर्टिलाइजर नहीं दिख रहा। पहले जाते हैं मिस मार्गरेट वाइट से मिलने, शायद वो देगी हमें फर्टिलाइजर। Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? नहीं, इनके पास भी नहीं है तो जाते हैं डिवाइन सिंडिकेट। मंदिर के अंदर जाने से पहले इधर देखते हैं, इधर कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो जाते हैं अंदर और उस प्रयोगशाला में ढूंढते हैं, शायद उधर मिलेगा। इधर कुछ तो है। This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. अरे तो उन्हें अल्कलॉइड चाहिए था, मुझे लग रहा था कि उन्हें फर्टिलाइजर चाहिए। तो ठीक है, जाते हैं घर और करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो चालू करते अपना केमिकल लोचा। I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor.
I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. तो देखते क्या करना है. नहीं, उठाने का तो नहीं है. कुछ हो रहा नहीं, उठा के वापस रख देते हैं. जांचते हैं एक बार. Carnivorous plant. उस पर अल्कोहल डालते हैं. अरे वो बंद हो गया. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. अभी बाएं तरफ के झाड़ को लेते हैं और उसे बीच में रखते हैं. This is a strange and unusual plant. उसमें अभी अल्कोहल डाल के देखते हैं. ये तो खुल गया. It appears to open after being soaked with alkaloid. कैटरपिलर देते हैं. अरे ये पौधे ने तो खा लिया इसे. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. A prickly plant. इसे उठाते हैं, बीच में रखते हैं अभी, और इसमें अभी अल्कलॉइड डाल के देखते हैं. ये भी बंद हो गया. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. पिन लेते हैं और टोचते हैं. It appears to have fallen inactive. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. पिन रख देते हैं अभी. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. आगे क्या करना है थोड़ा समझ रहा नहीं है, तो एक बार. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. नहीं, इसे कैटरपिलर देके कुछ नहीं हुआ. उसके अल्कोहल देते हैं वापस. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. अभी मैं समझा थोड़ा क्या करने का है. उसे अल्कोहल देते हैं. सॉरी, गलती से हो गया वो. Being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. नहीं, वैसा भी नहीं हुआ. मुझे लगा वैसे हो जाएगा. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars.
अरे मैं अभी समझ गया। इससे पहले अल्कोहल देते हैं जो पौधा गैस छोड़ रहा है। It appears to open after being soaked with alkaloid. इसे कैटरपिलर देते हैं जो खाता है। I find the बीच वाले पौधे को देते हैं। हाँ, हो गया। toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. डिडक्शन आया है वापस, वो करते हैं। डेडली प्रिसिशन और डेडली प्लांट स्टोलन जोड़ते हैं। नहीं जुड़ रहा। वाइट स्टडीज से जुड़ गया वो। इसमें 2 विकल्प मिले हैं। इधर वाइट्स नॉलेज देते हैं। नहीं छोड़ो, वाइट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस देते हैं। पता नहीं है। डेडली प्रिसिशन और एल्बर्ट्स एम्बिशन भी जुड़ेगा। इधर भी 2 विकल्प मिले, उसमें भी वो पहला वाला ही चुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक या ट्विटर फीड पे शेयर कीजिए या हमें एक कमेंट या एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।